सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम का आपका बहुत बहुत वेलकम है टू दिस फैब डे ऑफ अ पावर पार्टनरशिप। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं द पावर ऑफ 24 एंड यू से व्हाई and I say because of a very special association. Cast 24 अब है the principal sponsor of my favorite team Sunrisers Hyderabad. एंड आज इसी पार्टनरशिप की वजह से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मेरे रेड एफएम के 24 और RJs. I'm Malishka and I'm very, very excited to present to you all the rest of the RJs. But before we go to the powerhouses of Cast 24, I want you to meet our superstar Bhuvaneshwar Kumar, who's here with us from Sunrisers Hyderabad. Bhuvi, hi. Welcome to Red FM 93.5. Thank you. How are you? Very good and so glad to see you. How are you feeling about this whole thing? आप सनराइजर्स हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते हैं टीम के लिए, प्लीज कुछ दो लाइंस बताइए, तैयारी कैसी चल रही है? नहीं, बिल्कुल काफी खुशी है कि फिर से सनराइजर्स ने मुझे लिया, इतने सालों से इनके साथ था, तो प्रिपरेशन अभी जस्ट शुरू किया, 2 दिन हुए हैं। आई होप कि अच्छी रहेगी और जैसे जैसे टूर्नामेंट पास आएगा हम लोग विल पीक एट आवर परफॉर्मेंस एंड द प्रिपरेशन। ऑलराइट, एंड प्लीज गिव आवर बेस्ट टू द टीम. वी आर रूटिंग फॉर यू ऑल द टाइम. टीवी के स्क्रीन्स के थ्रू आपको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली व्हेन वी सी द रेड एफएम लोगो ऑन यू. Today of course that logo will also be alongside the Cast 24 logo and we're very excited about that as well. Please Cast 24 और Sunrisers हैदराबाद की इस अल्टीमेट पार्टनरशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काफी खुशी है हम लोगों की कास्ट 24 जैसे ब्रांड के साथ हम लोग एसोसिएट हुए हैं, जो इतने वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ पहले हैं जिन्होंने यूज्ड कार्स में अपनी कैटेगरी शुरू की है। और जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस था कि 2 साल पहले जो मेरे एक फैमिली फ्रेंड उन्होंने कार यहाँ से ली, तो काफी हसल फ्री और बहुत ही स्मूथ एक ट्रांजिशन जो था कार का वो था। तो आई थिंक जिस तरीके से वो खुश थे, आई एम श्योर कि हम लोग भी काफी खुश हैं इनके साथ एसोसिएट होके। और एक चीज जो हमने रिसेंटली सुनी है MRL के बारे में, जिस तरीके से लोग ऑपरेट करते हैं या वहाँ पे कार्स चेक करते हैं, आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर एनी इंडियन बायर्स की जब कार लेते हैं आपको बिल्कुल अच्छी मिले, बिल्कुल एक हसल फ्री मूवमेंट में जैसे मैंने बोला वैसे मिले। तो आई थिंक वी आर ग्लैड टू एसोसिएट विद देम. And we cannot wait to see you on the field. We cannot wait to be there with you. Thank you so much, Bhuvi, for talking to us. Enjoy the matches. और टीम को हमारी तरफ से जोरदार मतलब प्रोत्साहन. I want to say hugs. Thanks, Bhuvi. Thank you. All right, moving right back, like we said, this partnership is a beautiful one. We're very excited about it. और हमारे साथ इस वक्त Cast 24 के दिग्गज हैं. But before that, also 23 RJs from cities across India who are here to join in this power partnership. We've got RJ Dhrumil, we've got RJ Praveen, we've got Tisha, and we've got Ronak right now, जो दिल्ली से हमें connect करेंगे. Hey Ronak. Hey Malishka, how are you? Hey, beautiful, lovely to see all of us together. Great. Superb. So मैं इनफैक्ट हम लोग काफी टाइम से यहाँ वेट कर रहे थे और क्या अमेजिंग एसोसिएशन है 24 बिकॉज वी आर बिग इन नंबर्स, ऑब्वियसली 24 एंड कास्ट 24. सो मेरे को लग रहा है ये जो 3-वे पार्टनरशिप हुआ, एक तो रेड एफएम एंड कास्ट 24 एंड प्लस कास्ट 24 के साथ सनराइजर्स हैदराबाद, और फुल छाती पे छपा के फुल फुल इस बार जब भी हम लोग देखेंगे सो ये वाला मोमेंट भी हमको वहां पे याद आएगा. सो वेलकम मैं करना चाहूंगा हमारे साथ ग्लोबल CMO कास्ट 24 एंड co-founder गज्जू बोलूं मैं आपको? Mr. Jangid is there with us, and of course we have Sudhir Shukla, who is India CMO Cast 24. So आपको मैं रेड एफएम के इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में या ये बोलिए कि जूम इंटरैक्शन में या 24 एसोसिएशन वाला जो अल्टीमेट पार्टनरशिप हमने अभी रिवील करी उसमें मैं आपको वेलकम करता हूँ. कैसा लग रहा है? फुल सेटअप, मजा आ रहा है? Yes, very overwhelming. Like, glad to see so many faces. I wasn't expecting when I walked in the room. I was really excited to see and of course meet Bhuvi and the team for the first time. It was very mind blowing. You guys made my day, made my morning. Looking forward for this conversation, how it unfolds. So पहला क्वेश्चन मेरा यही है, इनफैक्ट सब लोग ये जानना चाहते हैं ये पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे हुई, आखिर हुआ क्या था कि आपको लगा कि ये करना चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद एंड कास्ट 24? Yeah. So Cast 24 should say the cricket or Cast 24 has always been together. Like Dhoni was our endorser, brand ambassador, everything, right? Since beginning 2018. And since then we figured out that cricket and Cast 24 has always been together, and the audience of cricket, which are one of the passion for India, they are always very excited about buying, especially buying and selling cars. So we saw this synergy early in the journey.
And that it was the right moment for us to now expand this journey and get a wider audience from the cricket community. And I think what else can be a better medium via IPL and over and above via SRH to partner with, to become associated with the IPL and the SRH journey for long term. Super, great, thank you very much. अभी I think प्रवीण है स्क्रीन पे. प्रवीण भी कुछ पूछना चाह रहे हैं फ्रॉम कोलकाता. हे प्रवीण, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम डूइंग गुड रॉन भाई, थैंक यू सो मच. और गजेंद्र जी, आपको कोलकाता से बुक भरा भालोबाशा, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. और समझ में आई आपको मैंने क्या बोला? ढेर सारा प्यार कोलकाता शहर की तरफ से. एंड आप और कार्स 24 जो है वो पिछले 7 सालों से ऑनलाइन स्पेस में है एंड यू आर द लीडर इन दैट मार्केट. सो मेरा क्वेश्चन जो है वो आपसे ये है कि कोई भी आदमी जब प्री ओन्ड कार लेने जाता है तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं गजेंद्र जी जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने. आई थिंक ये सारे सवाल ही जब भी कोई कस्टमर की गाड़ी खरीदना चाहता है और ये सब जब सोचता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल ही नहीं आते, साथ साथ में चिंताएं भी आती हैं. और चिंताएं क्यों आती हैं? क्योंकि इंडिया में 60 से 70% लोग हैं जो कि पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं. और जब आप पहली बार कोई भी चीज़ करते हैं तो आप ऑलरेडी नर्वस होते हैं, जैसे मैं आज भी नर्वस हो रहा हूँ. सो जब गाड़ी खरीदते हो तो उससे पहले जो चीज़ें चेक करनी होती हैं, इंजन की कंडीशन, ट्रांसमिशन, राइट, गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री, भी गाड़ी ने पहले प्रॉपर टाइम पे सर्विस हुई है कि नहीं हुई है, गाड़ी में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो रखा, कार में पहले बार कार का ओनर था वो उससे गाड़ी को कैसे से चलाया है, कार का एसी, बिकॉज गर्मी में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में आपको पता है एसी की कितनी ज़रूरत पड़ती है. सो दैट इस तरह से कम 140 चीज़ें होती है जो कि चेक करनी पड़ती है. और हमें पता है कस्टमर को ये सब चेक करना बहुत ही मुश्किल है. तो हमेशा कस्टमर अपने या तो भाई से पूछेगा या फिर अपने अंकल से पूछेगा या अपने मैकेनिक से पूछेगा. एंड वी न्यू दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ट्रबल्स कस्टमर सो मच. एंड दैट्स व्हाई वी रियलाइज दैट अगर यहाँ पे कोई एक ब्रांड अगर उन कस्टमर के पेन पॉइंट को सॉल्व करता है, अगर उस सारी कंसर्न को एड्रेस करता है और इंश्योर करता है कि हर एक गाड़ी उन सारे चेक पॉइंट जो कस्टमर के मन में सवाल आते हैं उसको अच्छे से चेक करें, और जब गाड़ी कस्टमर ले जाए उसके बाद कस्टमर को बिल्कुल भी चिंता नहीं हो और वो गाड़ी एक नई गाड़ी की तरह चले, राइट. तो दैट्स व्हाई वी फेल्ट दैट देयर वाज ए नीड ऑफ ए कंज्यूमर टू बी सॉल्व इन दिस स्पेस. और हम उस मॉडल को लेके आए और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने MRL लॉन्च किया, जो कि गाड़ी को चेक करता है एकदम 140 पॉइंट्स पे, ताकि गाड़ी एकदम नई की नई रहे और कस्टमर को कोई भी चिंता नहीं हो व्हेन इज बाइंग ए कार फ्रॉम कार्स 24. गजेंद्र सर, MRL क्या ऑफिस का एसी भी चेक करता है? क्योंकि वहां पर गर्मी हो रही है, रौनक भाई को बड़ी गर्मी लग रही है. पर गाड़ी का एसी और एसी की तरह काम करता है, तो आई एम श्योर विल बी एबल टू चेक इट. नहीं, और MRL की आपने बात की. थैंक यू वेरी मच प्रवीण, थैंक्स फॉर आस्किंग. सो वी हैव ध्रुमिल विद अस फ्रॉम अहमदाबाद. ध्रुमिल भाई કેમ છો? મજામાં? એકદમ મજામાં રોનક. હું અત્યારે I am at the MRL center in Ahmedabad, and the moment I entered here, this is huge, and huge not just in terms of the space, but I think जिस तरीके के यहाँ पे checks होते हैं, जिस professionalism से यहाँ पे काम हो रहा है, I don't think pre-owned car industry में इंडिया में इस लेवल का काम पहले कभी हुआ होगा. So this is amazing. My question is for Mr. Sudhir. MRL definitely pre-owned car segment को revolutionize कर दिया इंडिया में. The thing is कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां refurbish हो रही है वो दिखने में बहुत सुंदर लग रही है, बट क्या ये चलाने में भी बिल्कुल नई जैसी गाड़ी का एक्सपीरियंस देती है? I'm asking this question is because जब लोग pre-owned कार खरीदते हैं उनको बहुत सारे apprehension होते हैं कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. So if you could please explain how does the MRL work? Hi Dhrumil, very good to see you, and even better to see you at our Ahmedabad MRL. I think जो आपने सवाल पूछा ये बिल्कुल सही सवाल है, और आप ही नहीं सारे लोग जो गाड़ियाँ प्री ओन खरीदते हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है. सो सभी सुनने वालों के लिए पहली बात, MRL है मेगा रिफर्बिशमेंट लैब. हमने 7 सिटीज़ में खोले हैं, 35 एकड़ की फैसिलिटी है. जैसा ध्रुमिल ने बताया बहुत ही बड़ा है. सो हमने कोशिश की है कि जब भी गाड़ी हमारे पास आए तो हम उसको 140 पॉइंट चेक्स के थ्रू बेसिकली सारे चेक्स करके कंज्यूमर को देने के पहले उसको एज गुड एज न्यू कर पाएँ, राइट. और इसमें 140 चेक्स में देयर इज़ जैसे कुछ अंदरूनी चेक भी होते हैं, गाड़ी का इंजन, गाड़ी के क्लच, गाड़ी के ब्रेक्स, गाड़ी के ट्रांसमिशन चेक होते हैं.
और उसके अलावा बाहर से उसकी जो है जो भी हमें मरम्मत करनी पड़ती है उसको भी हम करके एज गुड एज न्यू करते हैं। और इस सब प्रोसेस के बाद हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि गाड़ी एज गुड एज न्यू है, इसीलिए हम 7 दिन तक गाड़ी वापस भी ले लेते हैं और 6 मंथ की वारंटी भी उस गाड़ी पर देते हैं, क्योंकि हमें अपने 140 पॉइंट क्वालिटी चेक और MRL पे पूरा भरोसा है, जो हमें लगता है कंज्यूमर्स को भी होगा। Superb, and I guess that's how Cars 24 stands out from the rest of its competitors. And now I have a business question, Sudhir ji. जब हम Red FM का लोगो सनराइजर्स हैदराबाद के टी-शर्ट पर देखते हैं, हमें बड़ा गर्व होता है. We will see the Cars 24 logo as well. But I want to know कि being the principal sponsor of Sunrisers Hyderabad, ये overall business को कैसे positively affect करेगा? क्योंकि business is king. So great question again, Malishka. I think जैसे कि गजेंद्र ने बताया, इंडिया इज़ अ क्रिकेट क्रेजी नेशन, ये तो कोई नई बात नहीं। हम सबको IPL और क्रिकेट से बहुत प्यार है, और जब हम ये पार्टनरशिप इसके बारे में सोच रहे थे तो हम चाहते थे ऐसा पार्टनर मिले जो हाई क्वालिटी के लिए स्टैंड करे, जो ट्रस्ट के लिए स्टैंड करे। अभी हमारे साथ कुछ देर पहले थे भूवी पाजी और यंग प्लेयर्स, जिनकी अपील सिर्फ हैदराबाद में नहीं, ऑल अक्रॉस इंडिया है। और SRH हैदराबाद एक बहुत सक्सेसफुल टीम है, पिछले 6 सालों में 5 बार प्लेऑफ्स में गई और चैंपियन रही है। सो जब हमने सोचा अपने ब्रांड के बारे में सोचा, तो हमें हमारे ब्रांड में Cars 24 में और SRH हैदराबाद में बहुत सिनर्जीज लगे, इसीलिए हमें लगा कि ये बराबरी का पार्टनरशिप रहेगा। एंड दैट्स व्हाई वी थॉट दैट इट वुड इम्पैक्ट बिजनेस अक्रॉस इंडिया एंड वी वेंट फॉर इट। Good decision, Mr. Sudhir. Can we have Surya? Hi Ronak, how are you? I'm All good, Surya. So Surya. Yeah. And my question to Mr. Jangid sir, when it comes to buying cars, what would be the one thing you would say is the USP of Cars 24, considering there are other competitors in the market? So one thing, the USP we're just talking about, right? The mega refurbishment lab, and I'll tell you why we are calling it a USP, because in India, the first time ever any company has invested so much money to ensure that each and every car get thoroughly checked by so many different high-tech equipments, so that customer finally gets a good quality car. This has never been done at such a large scale. We are very good at online player. We scale our business with the muscle power of the online, but we realize the power that we need to invest in the creating these kind of facilities, which enables enable Cars 24 to make sure that each and every car get tested thoroughly before that, right? So for me, the one reason why customers should buy a car is to knowing the fact that Cars 24 is so serious and invested heavily to make sure each and every car really runs perfectly on the road. और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, I think you have one more question to ask, please. My question is to Mr. Jangid sir. जब एक कंपनी शुरू होती है तब एक ड्रीम रहता है, एक एस्पिरेशन रहते हैं, कुछ माइलस्टोन्स रहते हैं कि हमें ये अचीव करना है आने वाले इतने वक्त के अंदर में। सो आज जब हम 7 साल की जर्नी देखते हैं, वी आर एट द पिनिकल ऑफ सक्सेस। हमने जो हमारा पहला माइलस्टोन था कि ये अचीव कर लेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ हम सक्सेसफुल रहे हैं, वो क्या था? एंड आज की जो सिचुएशन है, हाउ डू यू लुक एट दैट? जब पहला माइलस्टोन तो मैं कहूंगा जब व्हेन वी स्टार्टेड, अब तो जब बिजनेस पहले 5 सिटीज में ग्रो किया हमने, दैट वाज ऑलमोस्ट 2015 फर्स्ट 6 मंथ्स, और जिस तरह से हमें कस्टमर का रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, और यो कहता जब lot of people feel that valuation, जो आप valuation raise करते हो 500 million, 1 billion और ऐसे validation of success, but for us to beginning जब validation of success जब हुआ, जब we are able to grow in each and every city with thumping chest feedback from the customers, how we are really adding value in the journey of buying and selling cars. So for me that is a big I would say the success metric what we are looking at, our customer happiness score, and I think of course when this success was also being validated by our investors as well, and that helped us also grow into not only in the 5 cities in first year to now we are more than 100 cities all across India. So that expansion, and also another success what I would say is when your parents hears about someone and calls you that okay, my friend has bought a car from Cars 24, that also is a moment of pride that your parents from a small town called that one of his friend spoke to him about that he bought a car from Cars 24. So to me that was another milestone of success, very personal, but it was. And the third one was when we really expanded our presence out of India. So we launched ourselves last year in the UAE,
Australia, and now we are in Thailand as well. So originating out of India, ensuring that we solve the problem of customers in India, and now using this playbook to expand to the other countries was another milestone for us. So those are the 2-3 things which I want to highlight. Yeah. So compliment तो मिला, complaint भी आया क्या? अरे मैंने कार हाँ, of course. Complaint is always no business can run perfectly, right? Complaints makes you more aware of what's going on. Absolutely. I think वापस से ध्रुमिल के पास चलते हैं. ध्रुमिल, मेरी गाड़ी तो फिक्स हो चुकी है, ये वाली मैं ले रहा हूँ जो पीछे रुमाल रखा है मैंने. बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू मिस्टर सुधीर की Cars 24 से सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ियां चलती है? आर दीज हैचबैक्स, सेडान और एसयूवीज? आई थिंक हमने जो लास्ट 12 मंथ्स का अगर हम सेल देखें तो 3 to 6 लाख रुपीस के सेगमेंट में हैचबैक्स आर द पॉपुलर चॉइस. और जैसा कि गजेंद्र ने पहले बताया, 70% भारतीय जो हमसे गाड़ी खरीदते हैं ये इनकी पहली गाड़ी है. सो ज़्यादातर लोग जिनके शादी के बाद बच्चा हुआ या जॉब में प्रमोशन हुआ, इस टाइप के लोग ज़्यादा आके खरीदते हैं और इसीलिए ये सेगमेंट इनकी पसंद जो है रहता है. और एक और बात हो कि ज़्यादातर इंडिया में वाइट और सिल्वर कार ज़्यादा बिकती हैं. आई डोंट नो व्हाई. वाइट इज अ क्लियर चॉइस. सो आपके पीछे भी खूब सारी वाइट दिख रही है, तो आपको पता लग रहा है कितनी गाड़ियाँ वाइट बिक रही हैं. So thanks Drumil once again. Disha से connect करते हैं बेंगलुरु. Hi, Namaskara from the tech capital of India and a city that is gaining reputation as the traffic city of India as well. I have a question for you, Mr. Sudhir. Pre-owned cars is a rapidly growing market. And if I had to break it down very simply, what is the primary difference between a pre-owned car and a car that's cleared by MRL? So great question again. I think very simply put, the basic consumer problem in the pre-owned car segment is that consumers don't really know what they're buying most of the time, right? And I think our endeavor with the MRL is to try to give a physical dimension to quality, right? Because if you talk to any consumer in any category, they will say high quality cheese chahiye, right? Whether it's a shoe, whether it's apparel, whether it's a car. So I think through the MRL, we have tried to build a facility which is best in class, where we use the latest technology. We run 140-point quality checks. And we are very happy to share with this group that there are about 3 machines that we have at our MRL, which no original equipment manufacturer has in India. So it's not even there with people who are selling new cars, right? So I think these are the things which are different between, let's say, a car that you buy from the MRL versus any other car which is pre-owned and in the market. Thank you. मेरे सवाल, I think my questions are all business related at any point, any given point. So here's another question, Mr. Sudhir, this one's for you. कि Cars 24 और Sunrisers हैदराबाद की इस पार्टनरशिप को आगे ले जाने के लिए और इसे ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? Overall, हमें मतलब this is like I said earlier, we are a cricket crazy nation. We are no different. Gajju and I and everybody at Cars 24 are huge cricket fans. तो इस पार्टनरशिप के थ्रू हम चाहते हैं कि जैसे हमने गाड़ियां तैयार की MRL में 140 पॉइंट क्वालिटी चेक्स किए, वैसे ही SRH टीम भी तैयार हो रही है, उनका कैंप चल रहा है. आई एम श्योर उनका भी 140 पॉइंट क्वालिटी चेक चल ही रहा होगा विद लेजेंड्स लाइक ब्रायन लारा, मुरलीधरन, डेल स्टेन, राइट? सो हम एज वी स्पीक हमारी एक टीम के साथ होटल में है. हम कोशिश करेंगे कि जो सिमिलैरिटीज़ स्पोर्ट्स में है और एक हाई क्वालिटी कार को कंज्यूमर्स तक ले जाने में है, उसे हम उभार करके लोगों तक लाएं. कोशिश रहेगी कि हम जैसे मैंने कहा लेजेंड्स लाइक केन विलियमसन, ब्रायन लारा, डेल स्टेन, भुवी पाजी, इनके थ्रू ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकें कि व्हाट इज़ सो MRL क्या है और MRL से खरीदी हुई गाड़ी बाकी गाड़ियों से बेहतर क्यों है. It's going to be dhamal. You have to be ready for this. It's going to be crazy. Trust me. Thank you. So as you mentioned, the partnership, मतलब Cars 24 का भी और टीम का भी पार्टनरशिप है. I think प्रवीण के पास पार्टनरशिप वाला एक क्वेश्चन है. प्रवीण. Yes. So my question is to Mr. Sudhir. Sir, ये जो पार्टनरशिप है Cars 24 की एंड सनराइजर्स हैदराबाद की, ये क्या किसी हाईएस्ट जो बैटिंग में पार्टनरशिप होती है, क्या ये उतनी लंबी चलने वाली है ये पार्टनरशिप? इसमें तो कोई गुंजाइश, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए. It will be as long standing and as durable as any टेस्ट मैच पार्टनरशिप. आई नो दैट हम T20 टूर्नामेंट के दायरे में बात कर रहे हैं,
लेकिन ये डेफिनेटली लंबी पार्टनरशिप होगी और जैसा मैंने पहले कहा कि दोनों ब्रांड्स में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं. दोनों they stand for high quality, they stand for trust, they are loved across India, so we definitely are looking for a long-term partnership here. So इस पार्टनरशिप में आपको पूछूं तो कोई ऐसा बेस्ट लगता है? जैसे मेरे दिमाग में सचिन गांगुली और सचिन और सहवाग आते हैं, ऐसा कोई कपल याद आता है आपको? आता है ना, कास्ट 24 और SRH. ठीक है, ये भी सही है. आई थिंक दिशा के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं पूछना चाह रहा था, बट प्लीज दिशा, ओवर टू यू. Mr. Jangid, this one's for you. It's a very complicated question. I hope you can answer this after a great deal of deliberation. 24 RJs are coming together to celebrate this collaboration between Cars 24 and Sunrisers Hyderabad. My million-dollar question is, why Cars 24, not Cars 32 or 48 or 64 or 84? This is my question as well to Gaju. No, actually, I think many of the audience would not know. When we started, we did not have this name. At the very early stage, right, when we were small and doing some, beta testing between the users, and we were just thinking about the name. होता है ना, बच्चे के नाम करने से पहले सोचना पड़ता है बच्चे का क्या नाम. बच्चा तो आ गया, बच्चे का नाम नहीं पता. So just thinking about the names at that time, and we were, tossing between a lot of different names. And suddenly one night we were leaving the office, at around midnight, and one of my co-founder Vikram, he said, "यार अभी तो 24 घंटे काम करना पड़ रहा है, क्या करें यार? मतलब we are just there's so much work to do all the time, and also ultimately we're doing for the customers, and we are helping them buying and selling car." And suddenly my another co-founder, he realized Cars 24, right? So we are 24. In a way, we are working day and night to make sure that our customer gets what they really want, and we are able to solve their problem. And so suddenly we say, okay, Cars 24 is sweet and simple name, very easy to remember, and this is what represents us. So ये छोटी सी एक story है. There is not much story behind it, but I think it's a story and name built by what we really felt about at that point of time. So never underestimate the power of randomness, हाँ, कि अचानक से आ गया. अच्छा, वो दिशा ने इसलिए भी पूछा ना, बिकॉज हमारे बाकी और भी स्टेशन है, मतलब वी आर द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क इन इंडिया. सो बाकी बोले 24 ही है, तो इसलिए 24 ही आया, बाकी लोग आ नहीं पाए. दैट्स व्हाई दैट क्वेश्चन. थैंक यू दिशा, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. सो ध्रुमिल, हम लोग को बार बार MRL देखना है ना, इसलिए बार बार मैं ध्रुमिल के पास आ रहा हूँ. ध्रुमिल भाई, स्क्रीन पे आओ. आ गया भाई. My question is for Mr. Sudhir. जैसे आपने कहा कि जो Cars 24 के buyers है, 70% of them वो first time buyers है, और स्पेशली 3 लाख से 6 लाख का जो सेगमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा लोग गाड़ियां खरीदते हैं. Where do you look at the future of Cars 24 in this market, especially from the consumers buying perspective? Look, I think जहाँ तक गाड़ियों की बात है, जहाँ तक मार्केट की बात है, इंडिया इज स्टिल अ वेरी नेसेंट कार मार्केट. सो 100 में से सिर्फ 2 लोगों के पास आज इंडिया में गाड़ियाँ हैं, और हमें लगता है कि ये एज इंडिया ग्रोज, एज इंडिया डेवलप्स, एज पीपल बिकम अफ्लुएंट, कार ओनरशिप इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट विल सी अ ह्यूज अपटिक. सो हमारी कोशिश यही है कि फ्यूचर में जितने भी लोग गाड़ी खरीदें, पहली गाड़ी Cars 24 से ही खरीदें. इसके लिए हम MRL जैसे एफर्ट्स कर रहे हैं. इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में अपना प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं. जैसा गजेंद्र ने पहले बताया, वी आर ऑलरेडी देयर इन अबाउट 100 cities. और ये पूरा प्रोसेस आसान बनाने के लिए हम कंज्यूमर्स को कंज्यूमर फाइनेंस भी अवेलेबल करा रहे हैं. तो आई थिंक इन सारे के सारे कोशिशों में हमारा विश्वास यही है कि मार्केट विल ग्रो, and this segment will do really, really well. Like Gajendra again said earlier in the conversation, it's not just an India phenomena, but a global phenomena, which has given us the confidence to launch beyond India in UAE, in Thailand, and in Australia. So that's our thinking and our belief in the consumer sentiment. Lovely. So, Disha, once again, Disha. I have lots of questions, but I'll make this my last. Mr. Sudhir, this is my last question. We've heard high quality a lot of times in this discussion. I want to know, have you bought a car from Cars 24 yourself? Simple answer is yes. And I'm in the process of buying for my family as well. So I think everyone, again on the call, do keep checking the app from time to time. There are very interesting cars available across many cities. But short and simple answer, very proudly yes. तो थ्रिल होता है ना, कौन सी गाड़ी है, दिखने में मजा आता है, फिर उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना, इस पे ओपिनियन लेना.
इनफैक्ट बहुत मज़ेदार बात करी आपने, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग खरीदने आते हैं हमारे ऐप पर वो टिपिकली काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी, जैसा आपने कहा स्क्रीनशॉट, शेयर, रिव्यू, फीडबैक। तो लोगों को इस जैसे कहते हैं ना कि समटाइम्स द डेस्टिनेशन, सो द जर्नी इज द डेस्टिनेशन. कार बाइंग इज लाइक दैट, it's a fun process for consumers. Lovely. I think Surya के पास भी एक क्वेश्चन है. I think let's Surya. Sir, in your campaign, we saw Dhoni rapping check. So how many checks do you do? And another important question, can you rap? This to me? To me? No, I don't. I can't rap at all. But I was very impressed by how Dhoni rapped. That's for sure. I did not expect him, but I think that's how he's. That's how he played cricket. He can master anything else, right? So I was very, very impressed and thoroughly enjoyed, seeing him how he rapped in our latest ad campaign. So I think how many checks we do. That was the question, right? Yes, sir. Yeah. So how many checks? So I think when I go to the list, right, that if I had to count each and every check, it may go in thousands, right? If I had to really go in detail out, but the core 140 points check what we do, which we feel is the most essential part of the entire car, interior, exterior, underbody, under the hood and everything, which we check before the car get released to be published on our website, which is ready to get sold. So those 140 checkpoints are crucial, important, and we feel are most important for the customer to know that the car will really run perfectly on the road. So that's how it is. Yeah. एक फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा कि इतना 140 तो कस्टमर भी एक्सपेक्ट नहीं करता, बिकॉज वो भी कुछ ही की चीज़ें देखता है और गाड़ी बाय आउट कर लेता है कि भाई यही लेनी है. सो व्हाई 140? सो और भी नहीं, वैसे इसलिए मैंने बोला द पॉइंट, मतलब कम भी हो सकते थे. मेरा कहना है 140 बहुत ज़्यादा उसके. I'll tell you, car is a very complicated machine. The car has got more than 1 lakh moving parts, right? The car is a very complicated machine, and the more higher end car you goes to, more complicated it gets, right? But at the end of the day, you also have to simplify for the consumer to understand, and also make sure you are not getting things, making things overly complicated. So that's why we just distill down everything to those 140 checks, which kind of in a way represents what customer really would want to see in the car. And so it just happened to be 140. We didn't do the target that okay, this is how much we need to do. But yeah, we can go beyond that or below that, but we felt that was the right fit. Superb. Thank you, Surya, once again. Thanks. Thank you, Surya. Malishka, over to you. All right, I'm just going to say this was super. Thank you so much. हमने कार्स के बारे में, कार्स 24 के बारे में इतना कुछ सुना है, सीखा है. Years hoping के फ्यूल प्राइसेस लो रहे हैं और आपकी कार की सेल्स आ रहे हैं. उसकी गारंटी नहीं ले रहे हैं. A celebration of a great partnership between Cars 24 and Sunrisers Hyderabad. हम बहुत खुश हैं. Thank you. Thank you, Malishka. Thank you very much. Thank you, Malishka. Thank you, everyone else. Thank you. But before going, I have a question, Mr. Jangid. आपके लिए this last question. Just a message for all passionate car drivers, for all our listeners. जिस वक्त अपनी पहली गाड़ी खरीदने वाले हैं, just what would you like to say to them? I would like to say to them, you are buying the first car for yourself or family. It's a lot of excitement, a lot of nervousness as well. Make sure you don't get surprised when you're buying a car. Make sure you buy from Cars 24, and and hopefully you'll find the car what you're really looking for. While you are, it's the first time you're doing it, make sure you drive it safely. That's, I think, the most important thing. Driving safely, I would say, is one of the messages I want to give, to make sure that when you are riding with you and your family, you are able to, make sure that everybody is safe. And keep listening to, while you're on the radio, keep listening to the Red FM. Superb. Well, you have been speaking about first time, so I must tell you कि आपके Sunrisers Hyderabad के इस partnership के लिए, this is the first time जब हम 24 शहरों के अलग-अलग रेडियो जॉकीज एक साथ एक Zoom call पर आए हैं. So thank you for that as well. Congratulations on your partnership with us. We can't wait to see where it goes. And a big thanks to all my fellow RJs and colleagues from Red FM 93.5 all over. I hope you enjoyed the Zoom session. जबरदस्त है ना हम लोग? See you at the matches. 100%. Thank you, Malishka. Thank you, everyone. Thanks for joining. Thank you, guys. 9:05 बजाते रहो.